Okay. Then you might ask, then when should we read? And that leads us to the second habit, which says, habit number 2 says, fill in the time pockets. Fill in the time pockets. Now, what do I mean by time pockets? Before that, let me give you a backstory before getting into the habit number 2. If something is, if you keep doing same things that you have been doing till now, you'll get the same results that you got till now. If you want something that you never got, you have to do something that you never did. Expecting something extraordinary without making any changes in your daily routine is foolishness. आप अब तक जो करते आए हैं वही अगर करोगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक आपको मिला है. There won't be any substantial change. So success lies in your daily routine. Success is not massive stroke of genius. क्या कि अभी एक दिन में सीए हो गया, इंजीनियर हो गया तो बस अभी मुझे हो गया. नो, एवरीथिंग इज इन योर रूटीन. यू चेक आउट द रूटीन्स ऑफ योर आइडल्स, जो भी है, सचिन, अमिताभ, जेफ बेजोस. Go check their or even Sadhguru or whoever you idolize. Go and check their routines. Baba Ramdev wakes up at 3 o'clock, does his meditation, starts his yoga practice for 6 hours. When you wake up early, you feel like it's a long day. ऐसे लगते हैं बहुत ज्यादा घंटे दिन में. Yeah. And so first I worked on my routine. Yeah, I should have a very strong routine. So when I say fill in the time pockets, what do I mean by time pockets? See, we have thousands and thousands of tiny pockets of time of 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, which you just waste like a wandering dog on the street. And we say we are the most intellectual species in the animal kingdom. No, we are not. फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन पे हम टिकट टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं. No, we know it's a long queue. It's going to take another 5-10 minutes. But still we do nothing. We just keep staring at the dandruff of the person standing next to us. Or whatever is your pastime. I know any idle time today is filled up with that with that instrument. And your fingers start dancing on the screen. Dancing means ye aise wala. The most common gesture is scrolling the news feeds on Instagram. I don't have to mention it in particular. This is a disgrace to humanity that every idle time is filled up with aimless browsing. Browsing is not bad. Aimless browsing. If you open YouTube or any Google without any clear purpose in your mind, you are lost in that black hole. They will hypnotize you. Always open YouTube with a clear purpose कि मुझे अभी स्टीफन कॉवे का ये एक इंटरव्यू देखना है और वो देख के जस्ट गेट कम आउट ऑफ इट. वरना वो ऑटो प्ले बटन एंड सजेशंस एंड ये एंड वो, उसमें आप दलदल है, वो आप अटक जाओगे उसमें. सो सिंपल सॉल्यूशन मैंने क्या ढूंढा? आई डोंट हैव यूट्यूब ऐप इन माय मोबाइल. आई गो ऑन लैपटॉप इफ आई वांट टू वॉच. इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोस, आई डू वॉच, बट आई वॉच ऑन लैपटॉप. अभी लैपटॉप जब बंद होता है तो वो जेब में नहीं जाता है ना हमारे, तो मोबाइल जेब में जाता है. तो कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो मोबाइल साथ में रहता है, राइट? So instead of blaming ourselves or blaming the social media, no, social media is just a tool. अगर चाकू है, एक एक सर्जन के हाथ में दो और एक डाकू के हाथ में दो. सी, वस्तु वही है. एक जान बचाने के लिए यूज करता है, एक जान लेने के लिए. और चाकू से आप एप्पल भी काटो या किसी इंसान को काटो, राइट? इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन बिहाइंड इट. सो सोशल मीडिया को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता. इनफैक्ट यू एंड आई आर हियर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आई हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल रुपी ऑन मार्केटिंग. नहीं तो मैं बैकरप्ट हो जाता था ना, सब कुछ फ्री में देना और ऊपर से खर्चा भी करना है. दैट इज अ बैड आइडिया. नो, 50 lakh people are reading with me today only and only because of social media. I made use of everything, but whichever is freely available on internet. I have thousands of videos on YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok पे नहीं था मैं, but all whatever mediums were there. Okay.
So there are thousands of small time pockets of 5 minutes. The example that I gave, standing in the queue at a railway station, there is always some waiting time. Now, I have this, thanks to my childhood eating habits, I have to visit my dentist every 6 months. Every 6 months, I have to visit my dentist. And there are 2, 3 patients before me, even though I have taken appointment. वो तो होता है, right? He's a renowned doctor. And then what we do? We just stare at each other's miserable faces with that anxiety of that pain which I'm going to get on the dentist chair and the tooth drill. Why? But today, I never step out of my house without a book under my arm. Okay? When I go to the dentist this time, I just take out my book and put my nose into the book. Simple. Okay, I might end up reading 1.5 pages. Fine. That's what is expected. I'm not saying you read like me, one book a day. No. One book a day is पागलपन है. वो मैं कर रहा हूँ because मेरी जिंदगी है. वो मेरा प्रोफेशन हो गया है. That is my calling. That is the purpose of my life. जो आप ब्रेक में करते हो, वो काम से मैं ब्रेक लेता हूँ. वो पूरा दिन पढ़ता हूँ. So don't compare your reading with my reading, okay? That's why I'm giving you solutions for you. Right? और पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन होती है. अच्छा, आप बोलोगे कि तो हर बार फिजिकल बुक कैरी करना पॉसिबल है क्या अमृत? हु इज आस्किंग यू? एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी. Yeah, I think it's no less than a miracle that I have 200 books in my pocket in the form of PDF. I think it's a miracle. I can't carry more than 4 physical books in my bag, but you can carry 200 books in your pocket. I think we don't deserve such kind of benevolent things from that humans have invented. Yeah. So fill in the time pockets. ये तो मैं कुछ examples दिया हूँ आपके. You can find out your personal waiting times. Yeah. And जैसे काफी लोग अभी मेरे ऑडियो समरी सुनते हैं. While cooking there is a lot of waiting time. You have to do nothing for 5 minutes, like जब वो सब्जी पक रही है. But you can play the audio summaries on speaker mode and listen. Yeah. So now gone are those days that book in hand style of reading is the only way of reading. No. Let us expand the gamut of reading, the definition of reading. Okay, listening, because of technology, even listening is part of reading now. When I say make India read, तो एक ने मुझे ऐसे बोला कि तू तो बोलता है make India read और सब लोग तो सुन रहे तेरी audio summaries. I said, come on, don't go by the word, go by the spirit. Just because the sensory organ is changing from eyes to ears doesn't mean knowledge is not getting into your heads, right? वरना फिर क्लासरूम में हम टीचर को सुनते भी और देखते भी है ना, तो वो कैसे नॉलेज गेन होता है हमको? Listening is no lesser than seeing, okay? So don't you think watching Steve Jobs interview on YouTube is as good as reading part of his biography? Yes or no? हाँ, वो अलग बात है कि वो इंटरव्यू के बाद नूरा फतेह आ जाती है नाचने को वीडियो में. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर व्हिच आई विल टच अपॉन लेटर. सो फिल इन द टाइम पॉकेट्स. आपको समझ में आ गया? या. एंड सो व्हेन आई स्टडीड मेरे खुद के टाइम पॉकेट्स में कितने वेस्ट कर रहा हूँ, आई रियलाइज्ड आई हैव वेस्टेड मिलियंस ऑफ सच टाइम पॉकेट्स इन माय लाइफ एंड आई रिग्रेट. आई कुड हैव फिल्ड देम अप 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स. एंड मैंने देखा कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 90 मिनट्स जब सबका टोटल लिया मैंने, मेरा, मेरे दोस्तों का, अलग अलग डेमोग्राफिक, हाउसवाइफ्स, बिजनेस पीपल, शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स, एवरेज आया 90 मिनट्स पर डे. इफ आई sum it up all those tiny time pockets in a day, it came to 90 minutes. 90 minutes मतलब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट. मतलब 1.5 घंटा अगर रोज आप सिर्फ बुक पे दोगे, चलो उसमें से 1.5 घंटा मत दो, 1 घंटा भी यूज करोगे 5-5 मिनट से, यू कैन इजीली फिनिश अ बुक विद इन 1 वीक आराम से. मेरी वाली बुक तो आप 2 दिन में खत्म करोगे. राइट, दैट्स द पावर. बाय द वे, आई हैव नॉट इंक्लूडेड योर कम्यूटिंग टाइम. ओला, ट्रेन. मुंबई में ऑन एन एवरेज अ गाय कम्यूट्स फॉर 2 आवर्स. वो कहीं पे भी रहे 2 आवर्स ट्रेन में जाता ही है उसका. right? तो वो तो अलग. हाँ, इफ यू हैव मोशन सिकनेस वगैरह तो
तो कोई मोशन सिकनेस है, सुनो। हु इज स्टॉपिंग यू? कुछ लोगों को वो मोशन में पढ़ने को जमता नहीं, राइट? आई एम लकी, आई कैन रीड इन, इनफैक्ट आई लव रीडिंग इन ट्रैफिक्स, आई लव ट्रैफिक्स। जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना मुझे ज्यादा पढ़ने को मिलता है। अनलेस आई एम नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट, ऑफ कोर्स आई एम ऑन द बैक सीट। वेल, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, फिल इन द टाइम पॉकेट्स। कोई ऐसे ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जो डिसाइड करना है और उसी वक्त पढ़ना है। ट्राई करो, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी कि रोज 5 से 6 मुझे पढ़ना है, या रोज शाम को 7 से 8 मुझे पढ़ना है। दैट रियली डजंट वर्क, एंड बिकॉज इट बिकम्स टू स्पेशल, एज आई सेड, habit should be casual. And so fill in the time pockets. Always carry a book in your bag, in your purse. Okay, if not, you have in your mobile. Make sure if you, और book में बोलूंगा तो book मतलब everything है। booklet आ गया, summary आ गया। I'm not saying just book. There are only two types of content on internet. One is entertainment, one is learning. मेरे लिए दो ही कैटेगरी। It's not that I don't watch entertainment videos. I love Kapil Sharma, but I make sure that both are in balance. Like 80% should be learning वाला, 20% ठीक है, थोड़ा मजा मस्ती, कॉमेडी देखा कुछ, या। बट आई नो वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट वीडियोस अ लॉट। वो थंबनेल्स देख के कुछ दिमाग में क्या होता है पता नहीं है, और उस पर क्लिक करने का मन करता है कि लेटेस्ट कपिल शर्मा का वीडियो में क्या हुआ एपिसोड में, और वो इंडियन आइडल में क्या हुआ, राइट? और वो थंबनेल इतने अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हमको क्लिक करने का मन करता है। Now that we have to know, we are not children. We have to think like an adult and do everything in moderation. That's what I'm to say. Okay? I can't give you any rules for that.